students. Welcome. Yes, Anupam. Good morning. Hello, welcome. Myself, Swati Pawar, one of the Biology Plus educator on Unacademy. Welcome you all the learners on YouTube. That is the lecture via Unacademy on the YouTube. Okay, so first of all, happy Diwali to everybody. दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. ठीक आहे. Have a happy and safe Diwali. Maintain social distance. Don't get overexcited in your enjoyment. Okay. Yes, welcome. Good morning, GD. So welcome you back on another session, that is tricks to remember cranial nerves. Before this, we have completed a few important sessions like yes, same to you everybody. Happy Diwali. God bless you all. Yes. So before this session, we have already completed few important sessions like guidance on MHT CET, strategy for MHT CET, then super 5 tricks to complete the biology syllabus in short. Then we have also done what you have to do while solving the paper, that is tips and tricks to avoid the errors and to score full marks or whatever you are aiming for. So such important all things we have already completed in our previous sessions. So this one is the next session called tricks to remember cranial nerves. Clear? So if you see in your 12th standard syllabus, you are having a control coordination topic, which is very important, right? So in that control coordination, you can expect 6 to 7 questions in your board exam, in your CET, or in your board exam also, with or without option. It is going to have 4 to 5 marks weightage. Clear? So this topic is very important. Especially this part, spinal nerves and cranial nerves, from that is very important. This spinal nerves and cranial nerves are the hot portion of that control coordination, from where you can at least expect 2 questions. Meaning, if I am telling you that there are you can expect 7 to 8 questions from the control coordination, I mean from that 7 to 8 questions, 2 to 3 questions you can expect from cranial nerves and spinal nerves. Clear? So this concept is very important, and this is the part where students get jumbled up, that how we will remember the charts and everything. Now if we go to spinal nerve is very easy. Okay. Cranial nerve is comparatively big. Spinal nerve, if you see, it is only 32 pairs, and you have to just remember cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccyx. These are the only 5 parts of the spinal cord which you have to remember. But cranial nerves, if you see, you have to remember a complete big chart. Why? Because there are the cranial numbers given to it, cranial names are given, then their distribution and their function, right, and what type of nerves they are. So these all things you have to understand. So this chart we are going to do today. Before that, Swati Live is my code, as my name is Swati Pawar. So Swati Live is my code for your plus subscription, where I am teaching detailed 11th and 12th complete syllabus for 2021 and 22. So the learners who wish to join our detailed courses, you can come and attend our series. We do have special classes also and plus courses also. So first you can attempt special classes, and if you then like, you can enroll for the plus courses. Great. So subscription code Swati Live, where you will get 10% additional discount. Okay. So next one, plus subscription के लिए 1 month plan is 2700, which includes all the 4 subjects PCMB for 1 month, where you will get whatever we are completing in that particular month. Apart from that, you will get separate doubt solving sessions, you will get weekly test, mega quiz test, mock test, everything is available. Clear? So you can take the subscription if you like of 1 month. You can proceed it with 6 months, 12 months. You will get EMI process also, and it is like it is a discounted rate. If you see 1 month is 2700, but if you take the packages like this of 3 months, 6 months, 12 months, then per month cost is reduced, right? So these are all the plus subscription features you can see. Now these are the all educators who teaches you in the batch courses. That is in we have Marathi batch course, Hindi, English. We have all type of batches. Wherever you feel comfortable, you can go and join. So Swati, here you can see my name. So I am teaching you in the English batch plus subscription.
Clear? Almost I have completed many of the important topics of your 12th and 11th also, but recordings are available, and whatever the remaining portion, now I am ongoing with that portion, so you can come and join us. Great. So chalo, we'll start for today's session, that is what you can say, our cranial nerve system. Just a minute, I haven't added the slide. Okay, so let's start for today's session, that is cranial nerves. Now, first of all, before going to this 12 number of cranial chart which you can see in the front of the screen, before that you should know what are cranial nerves. Cranial nerves are nothing but they are coming from the brain and getting spread in your body. नाउ अभी ये क्रेनियल नर्व्स का यूज क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स ये बेसिकली आपके बॉडी के सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है. सेंसरी मतलब क्या? द वन विच यू कैन सेंस, दैट इज मे बी इट इज अ टेस्ट, स्मेल, विजन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, सो वॉट एवर जो चीजें आप फील कर सकते हैं उसे आप सेंसरी कहते हो, राइट? मोटर मतलब किसी चीज की मूवमेंट. लाइक इफ आई पिंच यू, if I give you a pinch, then you are going to withdraw your hand. So this withdrawing of your hand is the motor, right? That pinching, that whatever you felt, like you got hurt through it, or whatever, that pressure or that touch or that feel which you have taken, that was sensory. And the one which you have withdrawn the hand, that is motor. So whatever this sensory and motor functions are given back to your body, sensory is receiving, motor is giving back. These all functions are not are controlled by cranial nerves. Clear? Whereas spinal nerves are also included in that, but spinal nerves we will study little bit later when we are going to do this chapter in the special courses on Unacademy. Clear? So today's session is on cranial nerves. So cranial nerves में you can see this is a sequence, students. ठीक है? ये sequence है. Just a minute. Yeah. Now it's okay. Okay. ये जो है वो सीक्वेंस है, ये नंबर है, तो ये सीक्वेंस आपको मिस नहीं करना है स्टूडेंट्स. जो सीक्वेंस दिया है आपको, दिस 1 2 3 till 12 यू कैन सी, दिस ऑल सीक्वेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसे रैंडमली नहीं दिया है. ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये इसका सीक्वेंस है 1 to 12 एंड दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से अगर आपका एक भी मिस आउट हो जाता है ना, तो इट विल बी डिफिकल्ट, यू विल लूज द मार्क्स. सो दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे कि अभी इसको याद कैसे रखना है आपको. तो एक तो पहले बात तो यू हैव टू लर्न 1 to 12 क्रेनियल नंबर्स, राइट? सो देर आर दिस नेम्स. अभी ये नेम हमें क्या करना है, आगे पीछे नहीं पढ़ना है, हमें इसे सीक्वेंस में पढ़ना है. इसलिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, या मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ ये सारी चीजों को याद रखने के लिए. स्पेशली दिस टू थिंग, नेम एंड नर्व टाइप, ये दोनों के लिए मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसके वजह से आपका काम बहुत इजी हो जाएगा. क्लियर? फंक्शंस तो एनीवे आपको पता चल ही जाएगा. अगर आप ये नाम आपको याद हो जाते हैं लिख के, तो ये नाम के सामने आपको उसका फंक्शन समझ में आ जाएगा. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यू हैव टू रीड दिस ऑल नेम्स वन टाइम. ठीक है? एक बार ये सारे नाम को पढ़ लो आप लोग, एंड फिर इसको अप्लाई करना. मैंने जो आपको अभी कोड देने वाली हूँ या ट्रिक देने वाली हूँ, ये ट्रिक्स आप अगर उस कोड में यूज करते हो तो यू विल डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग द नेम, तो आपका सीक्वेंस भी मिस नहीं होगा. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस 12 नेम्स एंड फ्रॉम दिस 12 नेम्स यू हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस. ठीक है? सो यू कैन सी दिस 12 नेम, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक. ये जो पहले दो क्रेनियल नर्व्स है ना स्टूडेंट्स, दिस 2 नर्व्स आर कमिंग फ्रॉम सेरिब्रम. अभी सेरिब्रम क्या है? ये 4 ब्रेन का पार्ट है. योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. तो अभी ये जो 4 ब्रेन है आपका, उस 4 ब्रेन में सेरिब्रम जो पार्ट होता है, इस सेरिब्रम से ये 2 नर्व्स आती है. बाकी के जितने भी 10 नर्व्स है, द 10 क्रेनियल नर्व्स, दोज ऑल 10 क्रेनियल नर्व्स, दे आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम ब्रेन स्टेम. तो ये सारी जो 10 क्रेनियल नर्व बची हुई है, ये सारे कहां से आएंगे? ब्रेन स्टेम से आएंगे स्टूडेंट्स. व्हाट इज ब्रेन स्टेम? जस्ट आपका जब जहां पे हाइंड ब्रेन एंड होता है, देयर इज अ ब्रेन स्टेम फ्रॉम वेयर स्पाइनल कॉर्ड विल स्टार्ट कमिंग आउट. फ्रॉम दैट ब्रेन स्टेम द cranial nerves will start coming out of it, right? So first 2 things you have to compulsorily keep it in mind. From this
12 cranial nerves. First two nerves, compulsorily first two nerves, that is olfactory, which is for smell, and optic, which is for vision. These two cranial nerves come from cerebrum, whereas remaining all 10 come from brainstem, which is the part of your hind brain. Clear? जहां से आपका spinal cord शुरू होता है. So the part of hind brain is called brainstem, जहां से आपके ये बचे हुए 10 cranial nerve आएंगे. अभी हम लोग देखते हैं ये 10 cranial nerve आपको याद कैसे रखने हैं. पहले तो आप लोग नाम पढ़ लो. First is compulsory olfactory, second is optic, third is oculomotor, fourth trochlear, fifth trigeminal, sixth abducens, seventh facial, that is eighth. You have to write here eighth, right? Eighth. डबल टाइम 7 लिखा है यहाँ पे गलती से. So eighth one is vestibulocochlea, right? Ninth one it is glossopharyngeal. 10th वेगस, 11 एक्सेसरी एंड 12th इज हाइपोग्लॉसल. तो पहले तो ये एक दो बार आपको नाम पढ़ के लेने हैं. अभी उसको मैं आपको शॉर्टकट देती हूँ, आपको याद कैसे रखना है. क्लियर? सो नाउ देर आर टू टर्म्स फॉर नेम्स टू रिमेम्बर. दो है, ठीक है. O3, T2, एफाग्वाश. ठीक है, देखो अभी इसमें आपको समझ में आएगा. एफाग्वाश, ठीक है. ये एक कोड है आप जो याद रख सकते हैं फॉर द क्रेनियल नर्व्स, फॉर क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स. क्लियर? ओके. तो O3, T2, एफाग्वाश, दैट इज AFV, राइट? GV, ASH, एफाग्वाश. नाउ इसमें O3 मतलब पहले 3 O. सो व्हाट आर द फर्स्ट 3 O? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक and oculomotor. These are the 3 O3. T2 कौन है? Trigeminal and trochlear, right? So fourth one is trochlear and fifth one is trigeminal. हो गए T2. एफाग्वाश. Now A is what? Abducens. Then F, facial. V, vestibulocochlear. G is your glossopharyngeal. V, vagus. A is your एक्सेसरी, दैट इज स्पाइनल भी हम लोग कहते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी. एंड H इज योर हाइपोग्लॉसल. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस यू हैव टू एफाग्वाश. ठीक है, ए नहीं है इसमें एक्स्ट्रा. नाउ दिस एस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेसरी और स्पाइनल एक्सेसरी. ठीक है, उस दोनों को मिला के नाम है. सो व्हाट इज द न्यू ट्रिक? दैट इज O3, T2, एफाग्वाश. Clear students? So this is you can remember in a simplest term for the cranial nerves. तो अभी इसमें O3 तो आपको समझ में आ गया. O3 कौन सा है? ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, oculomotor है, which is with the movement of eye. Then T2 कौन सा है? ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल. ये T2 है, ये O3 है, right? Then abducens is related with again the movement of the eye. So movement वाले eye के बहुत सारे nerves है, like optic is for vision, movement of eye movement 1, 2, 3. ठीक है, eye वाले 3 है इसमें, correct? So abducens is motor. F stands for facial in this. Look, F stands for facial, V stands for vestibulocochlear, then G stands for, see here, G stands for again glossopharyngeal, V stands for vagus, S stands for spinal accessory and H stands for hypoglossal. So this is the trick for the cranial nerve names. Clear? तो आपको करना क्या है? सिर्फ आपको you have to just simply one time you have to study all the 12 cranial nerve. just एक नाम आप एक दो बार पढ़ लो and when you had this code, ये कोड के थ्रू आपका सीक्वेंस कभी भी गलत नहीं होगा. तो कंपल्सरीली फर्स्ट विल बी व्हाट? ऑल्फैक्टरी, स्मेल. पहले दो सेंसरी है जो सेरिब्रम से निकलते हैं. सो वन इज स्मेल एंड अदर इज विजन. सो ऑल्फैक्टरी एंड यू कैन से विजन. दीज आर द फर्स्ट टू. देन यू हैव टू गो थर्ड वन ऑक्यूलोमोटर. बच्चा एक O, ऑक्यूलोमोटर. T2 दो ही है, T तो दो कौन से? ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल है, राइट? फेशियल से. देन यू हैव एब्ड्यूसेंस, राइट? देन यू हैव व्हाट? फेशियल. देन वेस्टिब्यूलोकॉक्युलर. Then G glossopharyngeal, V vagus, S spinal accessory and H hypoglossal. तो इस तरीके से अगर आप ये कोड याद रखते हो तो ये कोड है. अभी दूसरा कोड बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपको सेंटेंस फॉर्म में चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो सेंटेंस फॉर्म में आपको क्या याद रख सकते हो? ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी.
ठीक है. देन यू हैव टू गो वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आप लोग याद रख सकते हैं. अगर ये एक ट्रिक नंबर 1 है, ये ट्रिक नंबर 2 है, तो ये कोड फॉर्म में है एंड ये सेंटेंस फॉर्म में है. ठीक है, तो अभी सेंटेंस फॉर्म क्या है? ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी. मतलब क्या? ऑन इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, oculomotor, right? T stands for trochlear, another T stands for trigeminal, A stands for abducens, F facial, V that is your what you can say vestibulocochlear, G glossopharyngeal, V vagus, A एक्सेसरी और स्पाइनल एक्सेसरी एंड एच हाइपोग्लॉसल. सो आप दो तरीके में क्रेनियल नर्व को याद रख सकते हैं सिंपली बाय हार्ट करने से अच्छा. सिर्फ एक बार नाम पढ़ लो, क्योंकि एक बार नाम पढ़ने से आपको याद हो जाते हैं विद स्पेलिंग, तो आप लोग इस कोड पे वो नाम लिखना शुरू कर सकते हैं. सो इससे क्या होगा? आपका सीक्वेंस कभी भी गलत नहीं होगा. तो मैंने आपको क्रेनियल नर्व के लिए 2 ट्रिक दिए हैं, एक O3T2 एफिगविश एंड दूसरा दिया है ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी, वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ. ठीक है, मतलब हमारा ट्रस्टी कुछ ओकेजन होता है तो बहुत फनी एक्ट करता है, बट एनी हाउ उसके अंडर जो भी व्हीकल्स है वो बहुत अच्छे हैं. सो दैट इज द स्टेटमेंट. ठीक है, तो ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट, तो पहले 6 हो गए, दैट इज 1. 12 को 6 में डिवाइड करो. सो 1, दिस इज number 1, this is 2, this is 3, this is 4, truck is 5 and this is 6. तो on occasion our trusty truck act, these are the first 6. then funny, very good vehicle anyhow. ठीक है, so these are next 6. तो अगर आप ऐसे तोड़ के पढ़ते हो ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. इन दिस ऑल्सो आप लोग कर सकते हैं इसको. तो ये तो सबसे इजी है, O3T2 एफिगविश, ये अगर आप बैट करते तो आ ही जाएगा आपको. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेंटेन इट इन द सेंटेंस फॉर्म ऑल्सो. तो सेंटेंस फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है. सो ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी, वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ. क्लियर? सो ये 2 मैंने ट्रिक्स दे दिए आपको, यही 2 है सिंपल. अभी बाकी और कुछ आप ढूंढना मत, इसी 2 के फॉर्मेट में आप लोग ये 12 नंबर्स को याद कर सकते हैं सीक्वेंसली विथ स्पेलिंग्स. क्लियर? तो आपकी गलती नहीं होगी. अभी नेक्स्ट सीईटी क्वेश्चन आता है कि नर्व टाइप कौन से है. अभी जो आपको मैंने ये ट्रिक बताई कि क्रेनियल नर्व आपको कैसे याद रखना है, अभी ये तो आपको याद हो गया. ठीक है, आप लोग ये लिख भी लोगे, बट अभी इसके ऊपर आपको नर्व टाइप पूछते हैं. व्हाट टाइप ऑफ नर्व टाइप इट इज. अभी याद रखो बच्चों, पूरे 12 में से 3 ही सेंसरी है, ओनली 3 आर सेंसरी एंड दैट सेंसरी इज आईज, नोज, ईयर. ठीक है, तो अभी इनमें से कहां पे 3 है? पहले 2 ही आपके सेंसरी बन जाते हैं, दैट इज नोज एंड आई, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक. ये 2 सेंसरी आपके बन गए. ठीक है, फिर बचता है आपका कान. कान कहां पे आपका? यस, इट इज वेयर, सो इट इज योर हियरिंग वेस्टिब्यूलो. ठीक है, 7th वन ऑडिटरी, ऑडिटरी भी कहते हैं इसे. ठीक है, वेस्टिब्यूलो, कॉक्लियर और ऑडिटरी. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंसरी हो जाता है आपका. क्लियर? तो ये 12 में से आपके 3 सेंसरी है, दैट इज योर नोज, आईज एंड ईयर्स, विच यू नो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स. सो वी हैव दिस 3 सेंसेस. क्लियर? तो ये फटाफट जब आप लोग ये नेम लिख लेते हो, उसके सामने आप लोग इस 3 को सेंसरी लिख देना. अभी बचे आपको सिर्फ नॉक के बारे में पढ़ना है. अभी ये कैसे याद रखना है आपको? 1 old professor tested a frog, all girls vomited. हाँ, बट ये थोड़ा सिद्धांत बहुत व्हाट यू कैन से, थोड़ा यू कैन से ट्रिकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रेपोजिशंस एंड कॉन्जुगेशंस के वर्ड्स हैं. तो ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चों के लिए रिमेम्बर करना. तो अभी ये कैसा है? ये सिंपल है. ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट फनी, वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ. गाड़ी के बारे में सबको पता है. ठीक है, हाँ ठीक है. अभी इसके लिए आपको और यू कैन से O3T2 एफिगविश, दिस इज द सिंपलेस्ट वन अगेन. बट अगर आपको मोटोर के लिए, अभी एक नर्व टाइप के लिए अगर आपको पढ़ना है, तो नर्व टाइप के लिए एक सिंपल देती हूँ. ठीक है, सीक्वेंस, सिंपल सीक्वेंस देती हूँ ये सारे के लिए. नाउ सी व्हाट इज द सीक्वेंस. बेस्ट इज, ये आपको पता है इसलिए मैं ये दे रही हूं, ये सबको पता है. ठीक है, ये कहावत है, राइट? सम सेज मैरी मनी, बट अभी इसमें थोड़ा चेंज कर दिया हमने. बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर. मतलब क्या?
पैसे के पीछे मत भागो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अपना दिमाग लगाओगे तो पैसा अपने आप आएगा। पैसे के पीछे मत भागना, पैसा आपके पीछे आएगा, राइट। दिस इज सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो अभी ये हो गया नर्व टाइप। अभी इसको कैसे याद रखोगे? एस इज फॉर सेंसरी, हो गए पहले दो सेंसरी, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक, हो गए सेंसरी। मैरी मतलब मोटर, एम मतलब मोटर, दिस इज ऑल्सो मोटर, हो गए। देन बी मतलब बोथ सेंसरी एंड मोटर, मतलब मिक्स्ड नर्व, जो कि सेंसरी के तौर पे भी एक्ट होते हैं एंड मोटर के तौर पे भी एक्ट होते हैं। अगेन माई मतलब मोटर, बी मतलब बोथ, मिक्स्ड, दैट इज मिक्स्ड बोथ मोटर एंड सेंसरी। अगेन एस मतलब सेंसरी, ये हो गया ईयर का, यहाँ पे ईयर, ठीक है, ऑडिटरी। बी अगेन स्टैंड फॉर बोथ, मिक्स्ड वाला मतलब सेंसरी एंड मोटर। ब्रेन अगेन बोथ, एम अगेन मोटर एंड मोर अगेन मोटर, हो गया ना। तो अभी न्यू टर्म क्या है आपका, इसके लिए देखो, नाउ सी, लुक हियर नाउ इन द नर्व टाइप। सम सेज मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर, हो गया। ये इजी है ना सबसे ज्यादा, देखो S2 M2 BMB SB2 M2, अभी ऐसे तो याद नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अभी नेम के लिए दैट इज सिंपलेस्ट इज O3T2 एफेक्विश, और ऑन ओकेजन आर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ। ये हो गया नेम के लिए सीक्वेंस। नर्व टाइप के लिए मैंने आपको बेस्ट स्टेटमेंट दे दिया है कि सम से मैरी मनी सबसे इजी है, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो ये आपका नर्व टाइप का सीक्वेंस हो गया। तो अभी आप गलत नहीं होंगे। तो अभी हमने दोनों पढ़ लिया, देखो अभी दोनों को एक साथ रखो, O3T2 एफेक्विश, क्लियर, एफेक्विश हो गया। अभी इसी के नीचे लिख दो some says marry money but my brother says big brain matter more, ठीक है। दिमाग है तो सब कुछ है, सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं है, राइट। So these are the two simplest to simplest codes where you will not go wrong at all for the cranial nerves, and you can say what nerve type, clear। and यही सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर, ये 12 कोड में 12 नर्व के टाइप के साथ जाते हैं। सो यू कैन स्टार्ट बाय हार्टिंग अकॉर्डिंगली टू दिस, ठीक है। O3T2 एफेक्विश एंड सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। दीज आर द टू सिंपलेस्ट कोड्स आई हैव गिवन यू टू रिमेंबर दिस होल चार्ट। अभी आपको ना फंक्शन बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन एनीवे आपको पता चल जाता है, ठीक है। अगर वो ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड है नोज, देन स्मेल, आई से तो विजन, ऑक्यूलोमोटर मूवमेंट विथ आई, ट्रोक्लियर अगेन मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आई वाले 3 है इसमें। ट्राइजेमिनल इज रिलेटेड विद द फेस, तो फेस में दोनों होते हैं, सेंसेशन भी होता है एंड मोटर भी होता है। मतलब देखो ना, अगर आप टंग लेते हो तो आपके अगर यू हैव टेकन सम हॉट फूड, यू विल डू हा, और यू टेक सम स्पाइसी फूड, यू विल गेट द सेंसेशन, राइट। तो वो सेंसरी भी है, एंड आप मैस्टिकेशन खाते हो, च्यूइंग करते हो, बाइटिंग करते हो, सो दैट इज नथिंग बट अ मोटर। सो फेशियल में दोनों है, यू आर डूइंग सेंसरी ऑल्सो, मोटर ऑल्सो, तो इट इज अ मिक्स टाइप। एब्ड्यूसेंस again with the eye related, facial again facial expressions, taste again वो भी both आ जाएगा, auditory purely with the ear, glossopharyngeal again both which is related with your pharynx, larynx, taste, everything, vagus again is related with the gag reflex मतलब pharynx and larynx which you eat the food, peristaltic movement, and parasympathetic का मतलब है your visceral organs के जो movement होते हैं वो। then accessory दैट इज योर शोल्डर श्रग, शोल्डर के जो मूवमेंट्स होते हैं, नेक शोल्डर मूवमेंट जो आप करते हो, दैट इज इन एक्सेसरी। एंड हाइपोग्लॉसस, स्वॉलोइंग, स्पीच, राइट, निगलना, बात करना, तो ये सारे हाइपो में है। सो अगर आप फंक्शन एक बार भी पढ़ लेते हो ना, आपको याद हो जाएगा। आपको याद क्या नहीं रहता है, नेम एंड नर्व टाइप। तो आपको सिर्फ चार्ट एक बार पढ़ के लेना है अच्छी तरह से 1-2 बार, एंड देन यू हैव टू जस्ट सिंपली अप्लाई द कोड, ठीक है। तो उस कोड के नीचे आपको सिर्फ ये सीक्वेंसली नाम लिखते जाने हैं, बस फिनिश। सो आई हैव गिवन द बोथ कोड्स एंड ट्रिक्स फॉर द नेम
and the nerve type. So 12 name O3T2 Afakwish, nerve type, some say marry money, but my brother says big brain matter more. हो गया? So this I have given you today trick to remember 3 marks question in your board exam, that is give the 12 pairs of cranial nerve or 6 pairs of cranial nerve or any 5 pairs of cranial nerve, or they can ask you give first 6 cranial nerve, first 6. तो first 6 कौन से है बच्चों? O3T2A, O3T2A, राइट? यहां तक पहले 6 है एंड देन F से आगे तक बाकी के 6 है. सिमिलरली इफ दे टेल यू गिव एनी फर्स्ट 6 नर्व टाइप, तो नर्व टाइप उस नाम के साथ कहां तक आएगा? इट इज सम से मैरी मनी बट माई तक पहले 6 आएंगे, फिर ब्रदर से एंड तक मैटर मोर तक अगले 6 आएंगे. तो आप अगर ये कोड लिख के रखते हो ना तो आपको फर्स्ट 6 पूछने दो या नेक्स्ट 6 पूछने दो, आपको इजी जाने ही वाला है. सो बेटर 1 or 2 times you read this chart and then directly you start writing according to this code. Definitely you are going to remember it for long lasting. Hope these tricks have helped you to remember the 4 marks or 3 marks question in your board exam and in your CET. This chart gives you 2 to 3 marks questions, ठीक है. वेर स्पाइनल नर्व से भी एक क्वेश्चन आता है, क्रेनियल नर्व से 3 क्वेश्चन तो आते ही है, 2 से 3 क्वेश्चन. सो आई हैव गिवन यू फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर योर एंट्रेंस ऑल्सो द इजी कोड, राइट? सो यू कैन रिमेंबर दिस इजी कोड O3T2 Afakwish and the statement for nerve type, that is some say marry money but my brother say big brain matter more. बस हो गया खत्म, easy. Hope everybody has enjoyed this trick. Some more tricks I will give you for another topics also, where you can find it very easy statements where you can remember much more easily. If anybody is having any doubt you can ask me, otherwise we'll end up the session because today's session was tricks to remember cranial nerve, which I already have explained you, taught you how to remember, right? And they control, this cranial nerve control your body's sensory and motor functions, which are very important. ठीक है, चलो. So any doubt to anybody? No doubt. Hope everybody has liked the session. So we are going to meet for the next session on I think 16th, right? So there I am going to take a circulation important part. I am going to teach you some important concepts of circulation. Okay, so we'll be meeting after 2 days now, but my upcoming lecture is there. Okay, my upcoming lecture I'll give you today itself, immediately today after this lecture 12:15 I am having human reproduction mock test part 2. All the new learners can follow me on Unacademy and they can start joining my free classes. So this is a free class which is immediately after this lecture, 2:15 p.m. now. Within 10 minutes I am going to start that lecture on Unacademy platform. So everybody can come and join that lecture. That is human reproduction mock test part 2. So take care. Happy Diwali everybody. Stay home, stay safe. Bye bye. We'll end up the session now. Hope everybody is clear with the concepts.